and welcome to our live show today on Facebook. And we are very happy to have Sanjukta Roy with us. And this event has been organized by Multitasking Outstanding Mother Space. And it has been an initiative. It is an initiative by Beyond Imagination Club. So Sanjukta has been into a corporate career, and from there she has moved on to becoming a digital entrepreneur. So we'll talk about her and let us know your journey, Sanjukta. Where did you start? How did it all start? Thank you, Bhairavi, for giving me this opportunity of sharing my life's journey with you and Moms by VIC Group. And before I say something about me, I'd like to say Bhairavi herself is a very talented lady, and she's a life coach and has gone through a lot of hurdles in her life. So thank you so much for giving me this opportunity of interacting with Bhairavi. So before we start today, the first working day of the week in the afternoon, and let us hope that many people will join our chat show today and will be encouraged and get some inspiration in their own life. So I'll start a little, bilkul shuru se what happened. So I was in a very sheltered kind of life. I'm the only child, both my parents working in government jobs. So I was very protected and sheltered, and nothing, like it was like a bed of roses. Shuru mein, bilkul princess wali life. So I never knew what was hurdles, struggles, any kind of problem. So thoda bahut problem studies leke hai, so that is very normal. So that's it. After that, main struggle, first, amna samna jab hua. So it started after I passed my class 12. So I went, I'm from Kolkata. So I went to Nagpur to do my engineering for 4 years. So that was a residential place and it was far away from my hometown. So I had to do everything on my own. And so in the first year itself, so first year I was into electronics and telecommunications stream. But first year we have all the subjects together. So that's a combined, every streams like mechanical, all the subject you have to study. So we were having our exams, our final exams. So it was really, a big leap from class 12 to engineering. So that was something I had to cope up. And what happened, I made it a small accident. So in my hostel, I slipped and fell down. So it was just before the last paper, just the day before that. And I lost consciousness for a couple of hours. And I totally, it was a blackout. I didn't know what happened. So when the first memory came, I saw everyone in the hostel was around me. And when I opened my eyes, I saw, oh, what's going on? So they said, scared also. Yes, and I was very young. So I was just 16 years, you can imagine, just out of class 12. So I saw everyone was like, looking into me like this, and I was lying down on a bed. There was a doctor, and so there was a bandage on my head. So I said, oh, kya hua? And then they explained that I slipped down and there was a small cut at my back because wo ladki log hote na, they put their hair up and put a clutch. So kya hua? That clutch, because I fell on my head like this, clutch broke up and wo andar chala gaya. So that's why bahut sara खून आया था and a lot of things happened. And so doctor made a little stitch और उसको पूरा ऐसा करके पट्टी white bandage बांध दे उस पे. So and he said take full rest for 2 days or you cannot get up from the bed. पूरा rest लेना है. So that is something impossible in a hostel because you don't have anyone to take care of it, because all were of my same age and they were themselves not that grown up. So everyone was 16, 17 like that, and who will take care of me? Because this time there were exams going on, so everyone had their own exams to go, study for. So it was a big difficult situation, in my personal life.
how to cope up and what to do. I was very scared, and it was the first time I'm out of house, and ye ho gaya. So my parents were called, but from Kolkata till Nagpur there is no flight. You have to come by train. So us time there was no direct flight. It was around 20 years back, and so it will take at least a day, more than a day. It was I think 32 hours kuch train journey tha. So for my mother to reach. So that was a time, it was like a something that I realized that I have to help myself. There's nobody else there. Even my parents, so till then, as I told you, it was like a protected life. I always do depend on my parents, and I knew that somebody is there to be the lookout for me. Kuch bhi ho jayega, there is somebody who will be there to help me out. But that time I realized that when something happens, it is you only. There is nobody else in this world. You have to take care of yourself. So that time I went through a change, overnight, that I have to appear for the exam. At no cost, I cannot let that go. Because that was the last paper, and taiyari ho chuki thi. So I was all prepared. So I didn't want to waste because of this, whatever accident. I didn't know that this will happen. In life, you are never sure what happens the next moment. So I said, I have to appear for my exam. Everyone was like, what is she saying? She's out of her mind. Doctor ne 2 din ka rest bola hai. I said, no, whatever happens, I have to go out and appear for the exam. So even in the exam, all the teachers came, professors and everybody, sabne aake bole, okay, so will you be able to give the exam? I said, nahi, mujhe to dena hi hai. So substitute mila fir? Substitute mila ya likha aapne khud? नहीं मैंने खुद लिखा because my hands everything was fine, just इसमें सर में चोट लगी थी, so bandage था, but I could think everything. So I said मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा हाथ ठीक है, I'll give the paper in the same time, extra time भी नहीं लिया. I appeared for the paper and everything. So that made me very strong. So that was a turning point in my life, जहाँ पे ना मैं थोड़ा सा emotionally और determined, ये सब थोड़ा अपने आप आ गया. So that was a learning lesson that I'd like to share with everyone. कि हमेशा जब भी it's very सबका ही साथ होता है कि we have a very sheltered life, very few are there जिसका बचपन में थोड़ा problem होता है, but otherwise most of us have a very sheltered happy life. But all the time ना थोड़ा सा you have to be prepared कि जो भी हो जाए life में अपने आप को you have to be in a position to support yourself. ऐसा नहीं कि you मतलब just टूट जाओ या emotionally have a breakdown. No, you have to be strong enough to support yourself, and I believe you are your best friend. So इस दुनिया में कोई भी और नहीं है जो तुमको मतलब जितना अच्छी तरह से समझ सकता है. So I think before your actual life journey started, you already had a big hurdle that made you ready for the further phase of your life. For the struggles, exactly. वो एक foundation हो गया था. Strong foundation. हाँ, correct. So after your engineering, you got into a corporate job, and how did you move on to becoming a digital entrepreneur? हाँ, so that उसका और एक कहानी है. So usually क्या होता है, parents already हमारे लिए एक path choose करके रखते हैं, because अभी तो different story है. अभी बच्चे लोग they have their own decision, they decide कि क्या करना है नहीं करना है. But जब हम लोग का career start हुआ था से 12 साल पहले, so it was like a parents choose करके decide करके रखा था कि engineer बनेगी, job करेगी, फिर after few years शादी होगा, फिर family life. So it was like a very already story बना हुआ था. हम लोग ready था. हाँ, हम लोग कैरेक्टर थे, स्क्रिप्ट वाज रेडी, बस हम लोग को वो प्ले करना है लाइक एन एक्ट्रेस. सो वैसे ही हुआ. सो इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमबीए किया, उसके बाद कैंपस से मेरा जॉब भी लग गया कॉर्पोरेट में. सो 10 साल आई डिड माय जॉब देयर. सो दैट वाज अगेन अ डिफरेंट स्ट्रगल. कॉर्पोरेट लाइफ इज नॉट सेम एज अ गवर्नमेंट जॉब. सो माय पेरेंट्स वर फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, तो उसका एक डिफरेंट पूरा माइंडसेट, डिफरेंट पूरा एटीट्यूड रहता है कॉर्पोरेट लाइफ का. देयर इज नो टाइम लिमिट टिल व्हाट यू हैव टू वर्क.
स्टार्टिंग का तो टाइम फिक्स है, पर एंडिंग का इट गोज ऑन टिल 1:30, कभी कभी 2 बजे रात तक हम लोग ने काम किया है, बिकॉज मेरा क्लाइंट्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, तो दे वर फ्रॉम लंदन, दे आर फ्रॉम अमेरिका, तो उन लोग का दिन शुरुआत होते थे हमारे शाम 6:30-7, और उनका दिन, हाँ 7:30 उसके बाद, तो काम आना स्टार्ट होता था 7 के बाद। सोचो 7 के बाद काम आएंगे तो उसके बाद हम काम करेंगे, so it will be 2-3 hours का story every day, this is to go on. So after I got my job, 2 साल बाद शादी हो गया, so my in-laws, शुरू में तो सब कोई बोलता है फाइन, ठीक है, but after you start living with the family for 24 hours, तब थोड़ा थोड़ा पता चलता है they were not okay, इतना लेट तक काम करेंगे and all this, so थोड़ा वो एडजस्ट करना पड़ता है, तो there were some struggles छोटा मोटा which was part of the life. फिर after I continued in my job, फिर I had my first child, and then also without a career break I managed my family, my job, everything I managed, but during COVID I think it should be very difficult, like first child and your job, all that would be pretty difficult, like experience नहीं होता है and सभी जगह से मैनेज करो. Exactly. तो क्या होता है, बिकॉज हमारा इंडियन सिस्टम ऐसा है ना, पीपल टेक फॉर ग्रांटेड कि जो लेडी है घर का वो सब काम करेगी, चाहे आप कितना ही एजुकेटेड हो, कितना ही टैलेंटेड हो, कुछ भी हो जाए और कितना ही इनकम करो, तो मनी इज नॉट दैट इश्यू, चाहे आप जो आपके हस्बैंड से ज्यादा इनकम करो या कम करो, बट इट इज नेवर इम्पोर्टेंट इन योर फैमिली. तो फैमिली में तुमको तो खाना पकाना है, सब कुछ ही करना पड़ेगा, चाहे whatever you do, whatever is your designation of what you have to take care. जी बहुत अच्छा बोलती है, like in one of her interviews she said, Indira Nooyi, she said that I was like, she was promoted to be the director, CEO ऐसा कुछ, and she came home very happy. And her mother sent her के तुम CEO तुम्हारे ऑफिस में हो, तुम जाके अब दूध लेके आओ, like so she keeps sharing this quite often. And this is, ये स्टोरी सबका ही लाइफ का है, मतलब वो CEO हो जाए या वो कुछ सीनियर पोजीशन में हो किसी और कंपनी में, so this is, ये स्टोरी सबका ही है, चाहे तुम ऑफिस में कुछ भी हो और तुम शायद रात को 10:30-11 बजे घर आती हो, डजंट मैटर, तुमको घर का काम तो करना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, उसको सिखाना भी है, घर का सब कुछ देखना भी है. सो ये आई से कि ये थोड़ा सा मैंने ट्राई किया मैनेज करने का भी. तो क्या होता है, जो मेन चीज होता है वो एक दिन मैंने सोचा कि ऐसे करूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी, बिकॉज यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम. सो थोड़ा बहुत कुछ डेलीगेट भी करना पड़ता है, जैसे यू कीप एक्स्ट्रा हायरिंग हेल्प, जो मैंने 2 मेड रखी थी, एक मेरा बच्चा के लिए डेडिकेटेड था, मतलब उसका ही काम करता था, एक घर का बाकी काम. सो ऐसे थोड़ा बहुत काम मतलब मैनेज करके आई कंटिन्यूड फॉर 10-12 years कॉर्पोरेट लाइफ में. फिर कोविड में क्या हुआ, कोविड के टाइम देयर वाज अ रिस्ट्रक्चरिंग मेरे कंपनी में, क्योंकि मेरा मार्केट रिसर्च का जॉब था, तो मार्केट रिसर्च में सिंस देयर वाज अ लॉकडाउन, तो वो रिसर्च करने का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ गए, देयर वाज टाइम रेगुलेशंस, तो कंपनी शट डाउन फ्यू ऑफिसेस, तो उसमें एक ऑफिस मेरा लोकेशन का था. सो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा मेरा जॉब शिफ्ट हुआ, आई वाज गिविंग अनदर रोल जो आई डिडंट वांट टू टेक अप, सो आई रिजाइन फ्रॉम माय कंपनी, एंड दैट वाज अनदर फेज ऑफ लाइफ वेयर from being a corporate, getting that fat package of salary, you are again starting on a new fresh chapter in your life, so there's a big shift. So usko bhi tackle karna is a different game altogether. So I went through that phase jahan pe there was a time jahan pe mujhe laga ki I'll emotionally break down. फिर वो अगेन ये भी होता है ना, फैमिली का इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है, इतना सेफ है, इतने साल से काम किया है, तो कंटिन्यू कर लो बस एक दिन. ये भी होता है, फैमिली का भी होता है ये. हाँ करेक्ट. जब एग्जैक्टली जब मतलब तुम ऑफिस जाते हो तो तुमको सुनना पड़ता है कि घर का काम कर लो, और जब नहीं जाते हो तब वो लोग बोलता है कि कोई और जॉब ढूंढ लो. सो ये चल रहा है, बिकॉज मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो पर उस टाइम क्या हुआ, मेरा
खुद का जो इंटरनल स्ट्रगल है, तो ये भी आई एम श्योर मेनी women they face all this same similar phases of life, क्योंकि सबका ही लाइफ में क्या होता है, दे डू अ जॉब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद फैमिली भी सबका होता है, एंड देयर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक इन आवर कंट्री एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्किंग फोर्स ऑफ लेडीज, इफ नॉट 50, मोर देन दैट, आई थिंक दे लीव देयर जॉब एटलीस्ट फॉर one year 2 year, आई एम श्योर एवरीवन दे टेक अ करियर ब्रेक जब फैमिली स्टार्ट करता है, most of them at least, and they again go for restarting. So restarting is never very easy क्योंकि there is a big shift of mind, फिर घर में छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के तुमको रिस्टार्ट करना पड़ता है. So मेरा केस वो नहीं था, पर मेरा केस भी वैसे रिस्टार्टिंग टाइप ऑफ था only. It is I took a break of around 1 year. उसके बाद I thought कि मुझे फिर अभी क्या करना है, should I go back to a job या मैं कुछ और स्टार्ट करूँ. So I said, फिर मैंने अपना ऑप्शंस देखा, फिर मैंने सोचा नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में तो मार्केटिंग बैकग्राउंड से थी, तो ये डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा एक करियर लगा. फिर आई शिफ्टेड टू डिजिटल मार्केटिंग, पर उस टाइम देयर वाज एन इमोशनल चेंज, देयर वाज सम मेंटल ब्लॉक जो आई ओवरकेम. सो उस टाइम इट्स अ लेसन दैट आई फेल्ट कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, बचपन से हम लोग कुछ कुछ सोचते हैं कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, वो बिलीफ सिस्टम जो है वी कैन चेंज दैट. सो वो हमारे अंदर ही है, वी कैन रिस्ट्रक्चर रिवायर आवर एंटायर बिलीफ सिस्टम. सो आई विल टेल दिस टू एवरीवन कि जो भी आप सोचते हो वो एक बार बेस्ड ऑन द सिचुएशन, एक बार यू कैन डिसाइड कि वॉट एवर वी आर थिंकिंग इज करेक्ट और नॉट, and based on the situation we have the power to change that entirely also. Exactly. तो आप अभी ये मॉम्स ग्रुप के साथ आप एसोसिएटेड हैं, तो जब आपने ब्रेक लिया, रीस्टार्ट किया अपना करियर एंड ऑल दैट, तो पिछले 1 साल में आप भी थोड़े टाइम से स्टार्टेड एसोसिएट, तो आपको क्या सपोर्ट सिस्टम लग रहा है, व्हाट इज इट दैट यू फाइंड इज गुड अबाउट दिस स्पेस एंड हाउ यू थिंक इट्स बीइंग हेल्पफुल टू यू? So moms group I was introduced through a friend of mine. She is a writer, and तो उसके बाद से ना मैंने जिसके साथ भी कनेक्ट किया, बात किया, so हमारे एवरी वीक मीटिंग होता है. So I joined 1-2 मीटिंग. शुरू में I was skeptical क्योंकि मैं ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा उतना टाइम नहीं होता है. फिर आई फील कि उससे बदला आई डू सम अदर वर्क जहाँ पे मोर कंस्ट्रक्टिव. सो आई वाज नॉट वेरी ओपन जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, बट फिर मैंने देखा कि पीपल मिक्स विथ ईच अदर वेरी क्विकली, और ग्रुप में जो भी है ना, दे आर वेरी ओपन टू ईच अदर. आप किसी को भी फोन करो, कॉल करो, दे आर ऑलवेज देयर टू लिसन टू यू, हेल्प यू आउट. तो हमेशा कोई ना कोई होता है जो अगर आपको कभी जरूरत पड़ा, दे आर देयर टू हेल्प यू आउट. और इसमें सिर्फ हम लोग बात और ये सब नहीं, आई मीन ओनली फन भी नहीं होता है. सो वी डू सम लर्निंग ट्रेनिंग ऑन स्किल्स ऑल्सो, जो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट, तो वो स्किल अब यूज करके यू कैन ऑल्सो मोनेटाइज इट. मतलब आपको इनकम भी हो सकता है और आपको एक सेकंड हसल या सेकेंडरी प्रोफेशन भी हो सकता है. सो दिस अ वेरी गुड थिंग. इट इज नॉट अबाउट ओनली bonding and fun and making friends and all this networking, but it is also if you want to go learning in your life, आपको skills बढ़ाना है, so this group is also good. So I think that is the good point of the moms group. That's well said. क्योंकि हम लोगों का मोटो भी यही है कि co-create, co-relate and co-elevate. तो ये बहुत रेलेवेंट आपने पॉइंट बताया कि दिस ग्रुप हेल्प्स ईच अदर ग्रो टुगेदर. लाइक खुद का ये नहीं है कि जनरली बात ये होती है कि वुमेन यानी एक दूसरे से जलते हैं, दे डोंट टॉक, अब खुद का सीक्रेट्स नहीं बताना है. बट इस ग्रुप में एक ये देखने को मिलता है, लाइक एवरीबडी इज देयर टू पुश ईच अदर कि नहीं तुम ये कर लो, वो हो जाएगा, ये कर सकते हो करके. दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट इवन आई फाउंड हियर. So all the viewers who are with us, I would like to tell you
कि अगर आप लोग इस प्रोग्राम को आज ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको, तो डू वर्क विद अस, कम टुगेदर विद अस, ग्रो अलोंग विद अस, टीच योर स्किल्स, व्हाटएवर यू हैव यू कैन टीच अस. देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी. आप कुछ हमसे सीख सकते हो, कुछ हम आपसे सीख सकते हैं, एंड टुगेदर वी कैन ग्रो एज अ कम्युनिटी. एक ट्राइब की तरह हम लोग एक साथ में ग्रो कर सकते हैं. एंड यस, बिफोर वी एंड द शो, आई वुड आल्सो लाइक टू टेल कि जो लोग इसमें लाइव में नीचे कमेंट करेंगे, इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, हम सबको एक स्पेशल गिफ्ट है जो मिलने वाला है 8 मई को, जब हमारा स्पेशल प्रोग्राम होगा, स्पेशल इवेंट होगा, उड़ान ऑन द इवेंट ऑफ मदर्स डे सेलिब्रेशन. So looking forward to seeing you all there, and also join us today evening on Instagram at 7 p.m. for another live show with another great mom with great achievements. So thank you, Sanjukta, for sharing your journey and showing how, like, initially life gives us those opportunities to mold ourselves ताकि हम लोग भी grow करें. So it was nice to know your story and to know your journey also. It's so much of an inspiration कि हम लोग भी, instead of taking it as a setback, we can always make a comeback. So that's what you did, and it's amazing and awesome. Thank you for joining us today. Thank you, Bhairavi, for this wonderful opportunity. And yes, I would request all our viewers who are watching us live, do comment, share lots of love and support, because there are some exciting prizes on 8th of May for every one of you. And do join our live show, a live chat again on Instagram at 7 p.m. There will be another wonderful mother for you sharing her story. Yes. Thank you all. Thank you so much. Thank you. Bye.